Alright guys, this is Facebook and ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है. First of all, look who do we have today with us. Facebook पे live तो हम लोग बहुत बार गए हैं, लेकिन क्या Facebook कभी आपने टीवी पे देखा है? Because you know my mom, my cousins, they all say that यार Facebook पे तो तुम live हो गए, but हमें टीवी पे नहीं देखने को मिला है. And by the way, my cousin is a huge fan of you. You want to say hello to all your fans first of all? Yeah, I would like to say hello because you put me live suddenly. Yeah, they can hello watch guys, and I get a little nervous when it's live. Actually, even I am nervous because ये पूरी history में पहली बार कर रहे हैं हम लोग Facebook पे live, 9XM पे live, Spotboy पे live. 9XM पे भी live. Yeah, this is on 9XM channel. You're right now live there also on Spotboy live also, and we are very happy that it is happening with you because जब trailers आए थे movie के it was going crazy on Facebook, एक ही दिन में everybody was sharing. Do you watch what is happening on Facebook? Yeah, I was also very excited because 2 साल से एक पिक्चर बना रहे हैं और उसका रिएक्शन जब पहली बार ट्रेलर आया तो I wanted to see that reaction and we were overwhelmed the kind of reaction we got. So thank you guys, thank you so much. And thank you so much. Thank you so much for tuning into 9XM right now because this is happening for the first ever time that we have Ajay Devgan talking about Shivai live on TV, live on Facebook. Ajay sir, we've seen you, 2 bike pe entry, 2 car pe entry, even 2 horses. What is the entry going to be like in Shivai? Oh, it's... I won't say it's simple, but नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई गिमिक नहीं है. इस फिल्म में ऐसी गिमिक्स नहीं है कि जो कि बहुत ही ज्यादा unrealistic है. Kept it on a very, very natural zone, but still larger than life. Yeah, it is. I mean, it's looking amazing. Shivai and Shiva, this just go hand in hand. What is your interpretation of Lord Shiva? मैं शिव भक्त रहा हूँ बचपन से और my interpretation of Shiva is the only out of all the gods. He's the only god who's not perfect. Yeah. Rest everybody you see photographs with smiling face, perfect. और जब भी उनकी कहानियां जो भी पढ़ोगे mythology या जो भी कहानियां पढ़ोगे वो एकदम perfect है. Shiva is the only god who has all the imperfections of a human being. Yeah. मतलब कि वो भांग भी पीते थे. He used to smoke up also. ये अपना चिलम भी पीते थे. वो उनको भोला भंडारी कहते क्योंकि उनको कोई भी बेवकूफ बना के चला जाता था. He was very emotional. फिर वो गलतियां भी कर देते थे. जब उनको गुस्सा आता था तो वो कुछ गलत करके फिर उसके बाद रिग्रेट भी करते थे उसको. तो I always felt that जितनी imperfections उनके अंदर हैं और वो imperfections को कैसे उन्होंने सही तरीके से चैनलाइज करके अपनी पावर बनाई. Yeah. And all those imperfections are there within all of us. Yeah, true. And if you can channelize it in the right way, I think you can achieve something. And honestly, your fans are loving the look. By the way, we have your fan questions ready. There's a Vivek Pandey Vicky says, what motivated you to do a film like Shivai? Basically the story. I won't even say the story. The idea and the emotion behind it. Technically, it's like a family drama, but an action-based. It is a kind of father-daughter story, but all that action and all that what you're talking about and all the visuals, they are a part of the film. But the basic story, if you see, is just about a relationship, and that is what inspired me. Okay, this one is a cute question. Ishita Soni says, what do you do in your free time? Since अभी तो आप बहुत busy हैं. मुझे फ्री टाइम मिल ही नहीं रहा है और मुझे फ्री टाइम चाहिए. प्लीज कोई मुझे फ्री टाइम दे दो. तो फिल्म रिलीज हो जाए फिर उसके बाद मैं 4-5 दिन की छुट्टी लूंगा. After that I have to start shooting again. Okay, again? Yes, I have to start shooting for Badshah. No, we are very happy that you're going to be coming back. Preet Shah says, who's more like you, Yug or Nisa? I would like to believe both. But yeah, Yug is too small as yet. And this I would say is, I can see a lot of me in her. Yoga I'll come to know in a couple of years. And we'll come to know too. Now, Jyot Singh says that which is your favorite song in Shivai? It's very difficult. Because मेरी फिल्म में जो गाने हैं वो गाने नहीं है. वो कहानी को आगे लेके जाते हैं. और जब मैंने अपने राइटर्स को कहा लिरिक राइटर्स को कि
ये मेरी सिचुएशन है और ये मेरे गाने हैं और आप गाने नहीं लिख रहे हैं, आप कहानी लिख रहे हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ हो गई कि एक वर्ड भी जो कैरेक्टर फील नहीं कर रहा है आप नहीं लिख सकते, और उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया। तो मेरे लिए दे लाइक सीन्स बट इन द सॉन्ग मैनर, सो आई कांट रियली पिन पॉइंट एग्जैक्टली। मुझे दरखास्त भी बहुत पसंद है, टाइटल ट्रैक सबको पसंद आया, दरखास्त भी पसंद आया, अब रातें करके गाना आ रहा है, उसका एक अलग इमोशन है। तो आप अगर देखेंगे मेरी फिल्म में, अगर आप पूछेंगे आपकी कहानी क्या है, तो मैं जानबूझ के ज्यादा कहानी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप गाने देखेंगे आपको धीरे धीरे कहानी खुलती रहेगी, और अगर आप गाने कनेक्ट कर लेंगे तो आपको टेक्निकली कहानी का आइडिया लगेगा। नहीं, हम तो टिकट खरीद के पिक्चर देखने जाएंगे तभी स्टोरी पूछेंगे। बट आपने इन द ट्रेलर वी सीन आप हिमालय चढ़ गए बिना ऑक्सीजन के, शर्टलेस भी थे, यू द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस। सो हाउ वाज दैट? लाइक पीपल आर आल्सो आस्किंग लाइक रियाज कि बल्गेरिया में शूट करना कैसा रहा था आपके लिए? बहुत ही अच्छा तो था बट बहुत टफ था, और -25 -30 डिग्री में शूट कर रहा है। यस, आई थिंक जो टीम मेरे पास थी, अगर वो सब ये नहीं फील करती कि ये हमारी फिल्म है, मैं ये फिल्म नहीं बना सकता था। बिकॉज चलो ठीक है, मैं फिल्म बना रहा हूँ, मेरा पैशन है, उस वक्त मेरे अंदर कुछ है तो मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पूरी टीम मेरे साथ जो खड़ी रही और सबने ये फील किया कि यार ये फिल्म हम सबकी फिल्म है, और वो मेरे साथ खड़े रह के जो उन्होंने काम किया है, वहाँ जहाँ हम सारा दिन काम करते थे वहां पे 1 घंटा नहीं खड़े रह सकते। वाओ, तो इट वाज सो बैड। टीम के लिए कुडोज। अच्छा, साइली पाटिल सेज अ वेरी क्यूट क्वेश्चन, यू हैव शोन सच डेयर डेविलरी ऑन स्क्रीन, बट क्या ये सही बात है कि यू वर स्कैर्ड ऑफ पियर्सिंग योर ईयर्स? या रियली? या I always wanted to do it, because I mean nothing scares me, injections don't scare me and nothing scares me. थोड़ा मेरा एक हाइट का फियर है वो, लेकिन I always वो आप हिमालय चढ़ ही गए, बट वो मैं हमेशा ओवरकम कर लेता हूँ। बट व्हेन टैटू कराए मैंने इतने, मतलब आई डोंट फील एनीथिंग, तो एक साइकोलॉजिकल था कि यार ईयर पियर्सिंग करवाना भी था, और लग रहा था कि जाने दो बट जब हुआ कि अजय देवगन को कान चिदवाने से डर लगता है, बट जब हुआ तो आई वाज लाफिंग, आई वाज लाइक हो गया क्या है, यू डिडंट फील इट। Yeah, Acha, are you very active on your social media, your Facebook, Twitter, everywhere? I wouldn't say very active, but kind of, yes. Because people are just going berserk, asking so many questions. But how was it collaborating with Badshah for the song? Because the song is being loved by everybody, and it's a very different song. It's a very different song because it is like a trance number. Yeah. It has got shlokas, it's got rap, it's got everything. वरना आज तक आप अगर कोई गाना सुनते हैं तो ऐसे लगता है भजन सुनाई देता है। तो we wanted, तो पिछले 1.5-2 साल मिठुन ने जो काम किया उस गाने पे, and I told मिठुन के I mean ये गाना ऐसा होना चाहिए कि कभी ये साउंड सुनी नहीं हो। और मिठुन ने बहुत सारा होमवर्क करके यहाँ तक पता किया कि अगले साल की जो साउंड प्रेडिक्शंस है वो क्या है, और उस हिसाब से उसने गाना बनाया। संदीप श्रीवास्तव ने गाना बहुत खूबसूरत लिखा, जैसा हमको एग्जैक्टली चाहिए था। फिर उसके बाद वी थॉट हु, तो इसलिए उसमें सुखविंदर की आवाज की पावर है, मोहित की आवाज की मिठास है, बादशाह की And I love the way it's shot. Thank you. In fact, you've not seen the way it is shot. Yeah. Because I didn't want to show what is there in the film. Okay. How the song is in the film. अच्छा, ये सिर्फ प्रमोशनल सॉन्ग है? जी, ये प्रमोशन फिल्म में गाना है, हाँ. लेकिन उसके विजुअल अलग है। Okay. Because that is only a big screen experience. तो भाई वो तो आपको सिर्फ सिनेमाज में पता चलेगा। बट ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। प्राची कदम says, when will you and Kajol work together? I really don't know. Whenever we get a script which suits both of us. Are you working on something like that? We're not working on something like that right now, but we're working on a script and we're starting a film with Kajol. Okay. जिसमें मैं नहीं हूँ, but it's under our banner. Okay. जो कि I think should start by Jan. I really would like to see you and her together. Anyways, Dr. Arunesh Arora says, why Saisha Sehgal is chosen for Shivai? Because I wanted a new girl. I wanted a girl who was, apart from good looking, young, and could perform. Because if you see my film, it's a really performance oriented film. Every character in the film has performed marvelously, and that is the demand of the film. तो मुझे मतलब बहुत टफ हो जाता है कि आपको एक नई लड़की भी चाहिए, खूबसूरत भी चाहिए, और वो परफॉर्मर चाहिए। Because usually new kids are raw. Yeah. So when we screen tested Saisha, she was raw, but she had the potential.
So then we worked with her, and she's come out very well in the film. Super. Yash R. Shah is asking you, how was the experience of directing the movie? Oh, it was great. It's something which comes very easily to me. So it wasn't. But what do you enjoy more, like, directing or acting? I would say both, but I have always been inclined more on the direction side. Okay. So before I became an actor also. I mean, I was on the other side of the camera any which ways. Are you very shy? Because that I've been getting a lot of questions about that also. Kind of. I am shy, more quieter. I don't make a lot of noise. Okay. All right. So Brian says, is there any chance of seeing a Drishyam sequel? Drishyam is a film. Some films are not meant to have sequels. Yeah. हाँ, कल को अगर कोई कहानी ऐसी मिल जाए तो अलग बात है, बट ये फिल्में जो अर्नेस्ट ऑनेस्टी के साथ ये फिल्में बनती हैं, ये सोच के नहीं बनती कि इसका सीक्वल भी बनाना चाहिए. तो दृश्यम जैसी फिल्म का सीक्वल बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि कल को ऐसी कोई कहानी मिल जाए जो कि which is as powerful as Drishyam. Super. Snehal Makwana is asking, how different is Shivaya from your other films till now? That you have to see the film and decide. It's an emotional drama. It's very, very real and larger than life, and the kind of drama, emotions, and I would say the scale and action you've never seen before. Okay. Now, this one is what I was just about to ask. Thank you, Tej, for asking this. He's saying that, acha, director Ajay, actor Ajay से different कैसे? Director Ajay में बहुत ज़्यादा patience है, actor Ajay में कम patience है. Really? Yeah. But मुझे, मेरा perception आपको देखे था कि सबसे शांत इंसान, सबसे patience इंसान अगर कोई है तो वो आप ही हैं. नहीं, मुझे बहुत कम patience. So what makes you lose it? I always I'm very particular about things. I don't like delays. अगर आप बोलेंगे कितने बजे पहुंचना है, अगर आपने मुझे 9 बजे बोला, I will be there at 9 sharp. कितने बजे तक, कितने घंटे का काम है? 2 घंटे का काम है. 11 I'll leave. Yeah. So I hate people coming late. I hate people who take it easy. एक बार पहुंच गए तो काम करो और निकलो. नहीं, हम टाइम पे हम आपको दिल्ली जाने नहीं देंगे वैसे, but this is true. I would like to tell everyone who's tuned in that हमसे पहले ये आकर तैयार होकर बैठे हुए थे. So there are very few actors like that. अच्छा, this question is from my cousin, because I told you that she is the biggest fan, that she always wanted to know what is the secret behind your eyes, because you've got like the maximum amount of compliments any actor has on his eyes. I mean, I can't judge what is the secret behind my eyes. जैसी ऊपर वाले ने दी है वैसी दी है. पहले लोग बोलते थे आधी बंद रहती है. बंद रहती है? हाँ, मतलब Really? नशीली रहती है, ड्रूपी रहती है. That people have said that. Earlier they used to say that. No, I've always but there's this scene in Hum Dil De Ishq Ke Sanam where Aishwarya goes and you are very sad about it and you take a back seat. Oh my God, I don't think so any actor could have done that. I think I'm very lucky that I can kind of emote with my eyes. I think that is God gifted. Oh, Nishant Gautam is saying, please ask, is Shivai dubbed in any other language as well? Not yet. No. Any plans? Let's see. We are contemplating about the South languages. So, देखो निशांत, अगर हो जाएगा तो तुम्हारे को शायद credit जा सकता है. But अभी we were talking about that you've received some criticism. Do you ever pay heed to criticism? Do you ever read that, whatever comes out? It depends on what they're talking about. If they are talking about something which I agree with, so many times there is something which I agree with, then I rectify it. Otherwise, I don't bother. अच्छा, प्लीज रक्तिम को एक बार आप हेलो कह दीजिए. वो कह रहे हैं रक्तिम राज, हेलो सर, आप बॉलीवुड की कौन सी मूवी को वापस से बनाना चाहेंगे, रीमेक? यार ऐसा कुछ सोचा नहीं. I don't know if I want to remake any film. Yeah. So why don't you guys send us your suggestions, and probably we'll ask Ajay sir कि अगर वो ये फिल्म बनाना चाहेंगे. You're live right now on TV and on Facebook, so send us your questions. Is it true that you are you don't like really take compliments very well? आप बहुत शर्मा जाते हैं, ये मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है. I think I get conscious. Yeah. So do you remember like the best compliment that you've got or the worst criticism you ever got? No, not really. Never? I don't remember. मिला होगा, but I don't remember. आपके फैंस इतने खुश थे कल जब हम लोगों ने ट्वीट किया that we're going to be live on Facebook and on TV to talk about this, and we are just about to end this because आप टाइम के पक्के हम लोग भी हैं. आपके फैंस को प्लीज बताइए what's in store for Shivai and the date, and so that all of us can go first day, first show and watch the film. It's releasing on the 28th of October, or I don't know what I should say. What is in store? Something which they have never seen before in our country.
A for one. And the reason I made this film was, और जो reaction मुझे जिनको मैंने film दिखाई है वही मिला जो मैं चाहता था, कि you come out with a little bit of tears in your eyes and a smile on your face, and you want to talk to, call up, or meet your loved one. Actually, I'll tell you the reaction that I received, and that was when trailers I think, wow, and that is the word for you and for Shiva. Thank you so much for being live with us on 9XM and on. Thank you so much, guys, for being there. Thank you. All right, you guys can still watch the comments on Facebook. Thank you so much. Please let us know how was it.